वेलकम टू CHDS रेडियो दिल से। मैं हूं आरजे रिश्मा और आज स्टूडियो में इस समय मेरे साथ हैं आरजे हरजाप। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आज दुनिया का हर व्यक्ति जूझ रहा है। कोविड-19 से आज सारी दुनिया प्रभावित है। हर बिजनेस पर इसका असर हुआ है और हमारी लाइव्स अपने घरों की चारदीवारी तक सीमित होकर रह गई है। इसका असर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी नजर आ रहा है। पिछले तकरीबन 1 साल से ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉकडाउन्स एंड स्कूल क्लोजर्स बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और फोकस इन क्लास लर्निंग से ऑनलाइन लर्निंग पर शिफ्ट हो रहा है। नो डाउट इस शिफ्ट की वजह से इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना एजुकेटर्स के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके सबसे ज्यादा असर हुआ है हाई स्कूल स्टूडेंट्स पर who are in the process of preparing for college and university applications amid the global crisis. इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे CTL Education से Honorable Bryon Wilfert से। Today in our studio, we have the Honorable Bryon Wilfert with us. He has held 26 years of elected political office, both as a municipal councillor and as a member of parliament, and was awarded the Order of the Rising Sun from His Imperial Majesty and the Prime Minister of Japan for his tireless work on Canada-Japan relations. Mr. Wilfert holds many notable positions and serves as chair of the Canada-Pakistan Business Council, advisor to the Canada-Vietnam Trade Council, honorary consul general for the Republic of the Union of Myanmar, and as an advisory board member to the Iranian-Canadian Business Expo. Currently, he also holds the position of the chair of CTL Education. Welcome to the show, Honorable Bryon Wilfert. It's great to have you here today. Well, it's great to be here, and thank you very much. I really appreciate the opportunity to talk about CTL Education. इन्हीं के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर रेशम विनायक जो प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर हैं इन CTL Education. An IIT alumni, she is a passionate teacher and enjoys working with evolving technology and uses it for students to keep up their spirit in challenging times. Welcome to the show, Dr. Vinayak. Thank you so much. Thank you for giving us an opportunity to be with you at this time and sharing what CTL has to do in the coming days. Right. So moving on to this new concept of online learning, Mr. Wilfert, our listeners would like to know, what exactly is CTL Education? Well, it's an excellent question. And originally, back in 2019, we were going abroad to places like Peru, Nigeria, etc., to establish a Canadian school system, if you will, in conjunction with partners in those regions. In other words, we were bringing Canadiana and the Canadian curriculum to those parts of the world. And that was going to be within an existing school or the building of a new school in places like Peru or Vietnam. With the pandemic, we had to change our whole educational model to go online. Unfortunately, we have now been able to secure what I would call third-party validation with providers such as TVO Ontario, with Amazon, with Dell Computers. What that means is that we have now shifted to the online education, but more of a holistic approach, which I know that my colleague, Dr. Resham, will talk about. But essentially, in this pandemic, we've had very difficult situation for many parents and students who have not been able to get the same kind of level of academic support that they would be used to in a normal classroom environment. So CTL really is all about bringing students to the highest level we can, but on an online platform, which we have also designed. That's so true, Dr. Bryon, because, every parent is facing a lot of challenges. So, Dr. Resham, since you are an educator yourself, you know about the challenges being faced by youth today and teaching methodologies में भी बहुत ज़्यादा changes आए हैं. तो CTL Education ने अपने आप को कैसे evolve किया है और कैसे आप इस system के माध्यम से young learners को आगे बढ़ने के लिए help और support प्रदान कर रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब देते वक्त मैं पहले तो ये कहूँगी कि जो कोविड से हुआ वो ये कि स्कूल्स पूरी तरह से रेडी नहीं थे इस चेंज के लिए. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे जो भी यूज हो रहे थे उससे दूसरी चीज ये हुई कि बच्चों को बोरियत सी आनी शुरू हो गई.
बिल्कुल। इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो गया। तो That's हमें true. सबसे पहले जो चीज अचीव करनी चाहिए है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो यही है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में वो बना रहे। वो कब होगा? जब वो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुद को इंगेज करेंगे। और वो कब होगा? जब हमारे टीचर्स इस तरीके से अपने लेसन्स डिलीवर करें जिससे कि वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बन सके। तो Yes. अब जैसे कहना चाहिए कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही हमारे लिए व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, इंटरैक्शन मीडियम, एक्सप्रेशन मीडियम, सब कुछ अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया। That's तो true. हमारे टीचर्स इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा रहे हैं जिससे कि बच्चे अपने सब्जेक्ट में एंगेज रहें, कैप्टिवेटेड रहें, उनका इंटरेस्ट बना रहे। साथ ही साथ हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम ये जरूर अश्योर करते हैं कि बच्चों की आपस में इंटरैक्शन जरूर रहे। उस इंटरैक्शन से जो चीजें क्लास में इवॉल्व होती हैं, जो क्लास का एटमॉस्फेयर इवॉल्व होता है, इवन दो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, वो बहुत बहुत कमाल का रहा है हमारे साथ। इसके साथ साथ एक और चीज जो सामने आ रही है वो है असेसमेंट। और खास तौर से अगर मैं बात करूं हाई स्कूल स्टूडेंट्स की, तो असेसमेंट थोड़ी सी पीछे को हो गई। हाँ अब जी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को असेस कर रहे हैं, हम असेस उनको करेंगे और ये अश्योर करेंगे कि अब आने वाला जो अगला साल है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। बेसिकली उनकी जो लर्निंग हो रही है वो लर्निंग बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की इस वक्त जरूरत है। इवन दो हम कोविड से अफेक्टेड हैं, इवन दो हम ऑनलाइन पे आ गए हैं, लेकिन उनकी लर्निंग पे अफेक्ट ना आए, ये हमारे प्लेटफॉर्म की कोशिश पूरी है। बिल्कुल, आज यही हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ पाएँ और आगे अपने करियर की शुरुआत कर पाएँ, राइट? सो तो डॉक्टर रेशम, हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स का एडवांटेज कैसे ले पा रहे हैं? हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ जहां तक हम पहुंच सके हमने उनको रीच आउट करा। एंड हमारे पास अभी कुछ बच्चे हैं भी, लेकिन इसके अलावा जो कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमारी जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है ctledu.org और हमारा ईमेल एड्रेस है contact@ctledu.org। तो आप इस पे हमें कांटेक्ट कीजिए एंड आपकी सारी क्वेरीज वहीं पर रिजॉल्व होंगी। okay, so Mr. Bryan, can you Yes. tell us about some programs that are being offered by CTL Education? Well, we have two arms of CTL Education. We have the CTL profit side, and we also have the nonprofit side. Okay. The nonprofit is essentially aimed with regard to what we call the Educate Me Canada program. Okay. This is a program, and we have tax receipts we can issue from the provincial government. We're also dealing now with Revenue Canada for federal tax receipts, which is aimed at what I would suggest is disadvantaged youth or youth at risk. These are individuals who sometimes fall through the cracks. And so what we do is we focus on, and Dr. Resham will speak more to this, on STEM being the science, technology, engineering, and mathematics, with also a component for English and for French. Okay. What we are doing is we are looking for organizations in the community. Could be a service club, could be Boys and Girls Club, etc., or it could be just an individual out there who wants to support young people who don't necessarily have the same advantages as others. And what that means is that they would sponsor 1, 5, 20, whatever students who would be able to use our program, whether it is for courses or particularly for tutoring after school. What this will give them the advantage is that they will get all of the opportunities to participate. And later I can explain, or we can explain the cost of such a program. But it's really to aim at those young people. The other is, of course, dealing with frontline workers' families, where we have a lot of parents who are on the front line doing a phenomenal job for us, but they are very stressed. And that stress, as we all know, sometimes filters down to their sons or daughters. And again,
same type of program where we would be able to outreach. We'd be looking for people in, say, in the Brampton community, Mississauga, that area, who may want to come forward and do some sponsorship for these young people, but they would do the identification. Okay. It's not necessarily we, because we don't know the community as well as obviously yourselves or others. So Yeah. that's really the nonprofit side of it, because we have a social responsibility as an organization to give back. And that's part of what CTL Education does. And of course, we do it a little differently through gaming systems and other approaches to our educational learning. So, Dr. Resham, for the Educate Me Canada program, how can students apply और इसका qualifying criteria क्या है? एजुकेट मी कनाडा प्रोग्राम के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे किसी भी और स्टूडेंट की है, बट डेफिनेटली इसका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रिलेटेड होगा वो होगा इनकम स्टेटस से या आपके जो पेरेंट्स का जॉब वगैरह है, हम वो सब एनालाइज करके उसके बाद बच्चे को एजुकेट मी कनाडा प्रोग्राम में डालेंगे. ओके, तो इसके अलावा भी आपके और प्रोग्राम्स हैं जिनमें बच्चे जा सकते हैं? जैसे मिस्टर ब्रायन ने बोला कि जो आपका स्टेम प्रोग्राम है, या उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, एसेंशियली तो मैं ये कहूंगी कि पढ़ाई तो देखिए पढ़ाई ही है, सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और हमने इसको बहुत ज्यादा एक ओपन वे में करने की कोशिश करी है, जिसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो जो सब्जेक्ट हमारे से पढ़ना चाहें हम उनको वो ऑफर कर सकें. हाँ, डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूशन का स्टेम की तरफ अलाइनमेंट है. स्टेम की तरफ अलाइनमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हमारी ओंटारियो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या स्टेट करती है, जिसमें आता है साइंस ऑफ कोर्स, मैथ्स ऑफ कोर्स, इंग्लिश और फ्रेंच उसके सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स माने जाते हैं. तो इन सब्जेक्ट्स का हमने एक पूरा पैकेज सा बनाया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ देखिए कुछ फैक्ट्स और भी जुड़े होते हैं. जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए हो, तो हमने बहुत फ्लेक्सिबल रखा है अपना प्रोग्राम. बच्चे जिस तरीके से चाहें वो अपने कोर्सेज चूज कर सकते हैं, वो हमारे साथ क्या पढ़ना चाहते हैं. वो चाहें तो लिटरली हमारे साथ एक स्कूल की तरह भी पढ़ाई कर सकते हैं. हम उनको एक पूरा सेट ऑफ टाइम टेबल शाम का, ऑफ कोर्स वी आर एन आफ्टर स्कूल, वी आर नॉट अ स्कूल, लेट मी क्लियर दैट अप, बट शाम को हम उनको एक पूरा टाइम टेबल प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर वो एक तरह से हमारे साथ बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे कि शायद वो एक स्कूल में पढ़ते हैं. Okay, so that's very interesting. Thank you so much, Mr. Wilfert and Dr. Resham, for joining us today. It was a very informative session. Would you like to say something else to our listeners? Also, अगर हमारे listeners आपको contact करना चाहें for further inquiries, तो वो कैसे कर सकते हैं? Right. वैसे मैंने अभी contact information provide करी. हमारी वेबसाइट का एड्रेस है ctledu.org और हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है contact@ctledu.org. इसके अलावा हमारा फोन नंबर भी है और मैं आपको फोन नंबर यहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ. फोन नंबर है हमारा 866-824-7664. I'll repeat, हमारा फोन नंबर है 866-824-7664. Okay, that was great. And I think Harjaap has another question for you. Right. So, Dr. Resham, can high school students get credit towards their diplomas? No, of course not. I just made that clear in the respect that we are not a school. We are an after school assistance at the moment. तो ये कोई क्रेडिट से रिलेटेड नहीं है. हम उनको क्रेडिट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं in a way that there is an all-round learning for that student. We are making sure that the student learns through a gamification approach in a way that he is not bored. It is not related to credits for sure. Okay. Thank you so much, Mr. Wilfert and Dr. Resham. So, अभी हम बात कर रहे थे Honorable Bryon Wilfert और Dr. Resham Vinayak से
who shared very valuable information about CTL education and the programs they are offering to help and support high school students and amid these global crises we are facing today due to COVID-19. अगर आप भी हाई स्कूल स्टूडेंट हैं और इन प्रोग्राम्स की हेल्प से अपने करियर को बेटर बनाना चाहते हैं तो फर्दर इंक्वायरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेलिंग देम एट contact@ctledu.org per or through their website ctledu.org. Also, you can note down their number and contact them at 866-824-7664. Thank you so much, Mr. Wilfert and Dr. Vinayak, for being with us.